गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आम आमर जो टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज चलती आज पार्ट 3 देखिए चैप्टर 1 रो एटा हमर लास्ट पार्ट। देन नेक्स्ट पार्ट आम एसटीएम रो क्वेश्चन आनिया जेतु पिला कहते कि एसबू माने पढ़िबनी तो आम +2 लेवल आनिबा। एटा लास्ट पार्ट एटा शेष करला पर नेक्स्ट लेवल तो चलो स्टार्ट करिया। क्वेश्चन नंबर 1, the processing capacity of a microcomputer is dash per second. कौन हम ये आंसर ना 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख नन ऑफ द अबव केते हो ना ऑप्शन ए 1 लाख इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a microcomputer is a small and relatively inexpensive computer with a microprocessor which is the first microcomputer. ऑप्शन कौन देला Z2 टाइटन 1 मार्क पी अल्टेर और नन ऑफ दिस तले कोठा हो ना अल्टेर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज डैश। डेस्कटॉप कंप्यूटर हम कोन जानते एटा समस्त जानिथिबे। ऑप्शन बी पीसी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सनल कंप्यूटर इज डैश। एटा भी समस्त कह परिबे एटा हम कोन कहबा पर्सनल कंप्यूटर को हम पीसी कहता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Then 105, computers that are portable and convenient for user who travel are known as supercomputer, laptop, mini computer, file server, none of these. कोड हबो ये आंसर टा ना लैपटॉप का हबो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, portable computer also known as a laptop computer weighing between 4 and 10 pound is called dash। 4 to 10 pound कोडा ना network of computer। option is the correct answer। then next, which of the following is the smallest computer। smallest computer हमें कोडा जानी चाहिए। ऑप्शन कौन देला नोटबुक डेस्कटॉप नन ऑफ दिस लैपटॉप वर्क स्टेशन। डेस्कटॉप तो बड़ नोटबुक तो समस्ते ऑप्शन ए छोटो आ नन ऑफ दिस छाड़ लैपटॉप भी डेस्कटॉप सहित समान वर्क स्टेशन तो बहुत बड़ ताले को ऑप्शन हबो ना नोटबुक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देन 108, a computer also referred to as a laptop is a small lightweight personal computer that incorporate the screen, the keyboard, storage and processing and components into a dash single portable notebook na journal diary briefcase none of this তাহলে এটা কোন হবে notebook। option A is the correct answer। then next question, which of the following can be considered as a portable computer। portable computer कोडा हमें कहे पीडीए এটা তো সমস্ত আছে তো ऑप्शन E is the correct answer। a personal computer designed to meet the compute needs of a dash कौन देला ना इंडिविजुअल तबरे डिपार्टमेंट कंपनी सिटी नन ऑफ दिस कोडा ना इंडिविजुअल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। then next question, multi-user systems provided cost saving for small business because they use a single processing unit to link several is called dash personal computer workstation dumb terminal mainframe laptop कोडा हो आंसर ना पर्सनल कंप्यूटर तो निजे निजे वर्क स्टेशन तो बहुत बड़ डम टर्मिनल कोडा जो यूज होची डम आउ ऑप्शन देला मेन फ्रेम कंप्यूटर भी समस्त जानते ई देला लैपटॉप ताले एटा कोडा हबो ना डम टर्मिनल। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए पीसी नाउ। पीसी रे वर्तमान कोडा अवेलेबल अछि ना मेन फ्रेम तो हबनी माइक्रो कंप्यूटर हबो मिनी कंप्यूटर हबनी बोथ बी एंड सी नन ऑफ देम ताले को ऑप्शन डा ना माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। A single bus structure is primarily found in dash mainframe supercomputer high performance machine mini and microcomputer none of the above would have answer now option D mini and microcomputer। then next question,
A dash is a large and expensive computer capable of simultaneously processing. Na handheld computer, personal computer, mainframe computer, tablet computer, none of these. Na mainframe computer, option C is the correct answer. Then next question. Which of the following is generally costly? Server, notebook computer, personal computer, laptop computer, mainframe. Mainframe ही सबुठु अधिक costly. Option A is the correct answer. Then next question. Dash processing is used to mainframe computer. को processing टा हमरा use होची? एटा समस्ते को जानिथिबे batch processing. Then next question. Smaller and less expensive PC based servers are replacing in many business. कौन ऑप्शन देला ना सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, नॉन ऑफ द मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज है ना. Dash are a specially designed computer that perform complexly calculations extremely rapidly. ऑप्शन कौन देला सर्वर्स, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर. कोटा हबो ना सुपर कंप्यूटर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following is most powerful type of computer? कोटा सबुठु पावरफुल कंप्यूटर ना सुपर कंप्यूटर. Number of curvature is the informal name for dash. Mini computer, super computer, micro computer, mainframe computer, none of these. कोड़ा हवा super computer. Option B is the right answer. And next question. A computer falls into the dash category if it is at the time of construction one of the fastest computer in the world. Mini computer, super computer, micro computer, mainframe computer, none of these. कोड़ा है थिला super computer. Sorry, option B is the right answer. Then next question. Which of the following computer is used in the weather forecasting? Weather forecasting में कोड़ा हमारे use करूँचे. Super computer, option A is the correct answer. Dash develop a Saga 220 super computer in 2011. 2011 ଆମର କଣ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା ନା ISRO. Which of the following is the fastest type of computer? कोटा fastest type of super computer. Super computer ना जेहेतु आम शुणुचे ताले कोटा ऑप्शन E is the correct answer. The first supercomputer was installed at Los Alamos National Laboratory of USA and was introduced in 1976. What was its name? 97 जो होइतिला तार ना कोन थिला? Altair, Cray1, Z1, Titan. कोठा थिला ने Cray1. Option B is the right answer. Then next question. Param is an example of a dash. एटा तो समस्त को आसुथबो ही आसुथबो. सुपर कंप्यूटर. प्रथम सुपर कंप्यूटर कोडा हमर इंडिया परम. What is the name of the fastest supercomputer of the world? Thine 2 IBM Jaguar K computer Mira Maya. कोडा ना ऑप्शन ए Thine 2. Which hardware are easily attached to computer and can played instantly? Option A कौन दिला ना plug and play. Option B peer to peer. Option C analog. Option D multimedia. Option E none of these. ताले कोडा हवा ना plug and play. ओडिशा गवर्नमेंट स्पोर्ट्स रे भी आमे कोन करछे ना पे एंड प्ले गोटे अछि. एटा जेमि plug and play. एटा से रिलेटेड नै एटा अलग. 129. Dash computer is the most powerful computer. कोडा सबडो बेसी पावरफुल कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर ना सुनु जो सुपर माने पावरफुल हेतिबो ही हेतिबो. Then next question. Modem is a dash application software, word processing software, hardware, liveware, none of these. Modem टा कोन application software तो हबनी, word processing software भी हबनी. Modem is a hardware. Option C is the correct. Modem रो काम कोन ना सेंडिंग करबो आ रिसीवर करबो. दीटा एका संगे कर परिबो. Then next question. Virtual memory is dash www.engineer. Memory on the hard disk that the CPU uses as a extended RAM
ऑप्शन बी देला इन रैम, ऑप्शन सी देला इन रोम, ऑप्शन डी देला कौन ना ए बैकअप डिवाइस फॉर अ पेन ड्राइव, ऑप्शन ए देला नन ऑफ दिस। ताहले को ऑप्शन ढा ना ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन द डैश। प्रोसेस डाटा हमर कोथे रहउची ना इनपुट डिवाइस ना आउटपुट डिवाइस ना स्टोरेज कंपोनेंट ना सिस्टम यूनिट, नन ऑफ दिस। एटा मते आशा करे समस्त आसुथो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the CPU and primary memory are located on the dash. Expansion board, motherboard, storage device, output device, none of this। তাহলে কোটা হবো না motherboard ସବୁଠୁ କଣ CPU and primary memory located होची motherboard। main ना motherboard by dash all the transformation of input into output is performed कोटा हुए कोथरे CMOS, storage, CPU, mouse। CMOS कौन देला ना CMOS, storage, CPU, mouse by dash all transfer of input into output is performed कोथरे हुए सी पचारची ना CPU रे CPU मेन ना। अच्छा मते कमेंट करो CMOS रा फुल फॉर्म कौन। Dash are those computers which provide resource to other computer connected by network, server, workstation, embedded, all of these, none of these। তাহলে কোটা হবে এটা none of these, option A is the correct। এ ভিতরে কোটা হলো। Then next question, to access the mainframe or supercomputers user often use a dash। कौन यूज है ना टर्मिनल, नोड, none of these, desktop, handheld। option A is the correct answer, terminal। in dash computer computation is carried out with physical quantities such as voltage, length, current, temperature, etc। एथरो हुए ना एनालॉग कंप्यूटर रे ए वोल्टेज, लेंथ, करंट सब कुछ मापे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर्स यूज ए डैश सिस्टम टू एनकोड डाटा एंड प्रोग्राम। सेमीकंडक्टर, डेसिमल, बाइनरी, रैम, रोम कोडा ना रैम सॉरी कौन देला ना डिजिटल कंप्यूटर यूज ए सिस्टम टू एनकोडेड कोडा आम एनकोडेड करुचे सिस्टम रे आम सदा बाइनरी ही यूज करते ना। रैम रोम तो मेमोरी, डेसिमल तो यूनिट, सेमीकंडक्टर जोटा आम नॉन कंडक्टर सॉरी इन्सुलेटर टाइप रो काम करे जोटा तो बाइनरी ही हो करेक्ट आंसर। सेमीकंडक्टर भी इन्सुलेटर ना माने सेटा सेमीकंडक्टर माने बोथ इन्सुलेटर, आधा इन्सुलेटर आधा कंडक्टर। Next question, a computer that combines the characteristic of analog and a digital computer। analog and a digital computer दा कोथरे हुए आशा कर एटा समस्त आसुथो। कौन कौन ऑप्शन देछि देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नॉन ऑफ कोटा है आंसर ना हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर चिप्स दैट राइज other device such as your car और योर इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मोस्टेट कौन यूज है ना एम्बेडेड कंप्यूटर अभी सब वर्तमान एम्बेडेड सिस्टम सब चलती ना अबे। व्हाट इज द मेन बैरियर टू डेवलपमेंट ऑफ ए क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर रे कोडा बैरियर भाबे यूज होतिला। ऑप्शन कौन दीची ना पिकिंग द कलर ऑफ द कैचिंग, the difficult of producing precision laser, the prohibited large amount of power required to start a quantum computer, next देला the problem of decoherence। ताहले कोडा हवा आंसर ना ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, modern computers compared to earlier computers are a dash। ऑप्शन ए देला फास्टर एंड लार्जर, ऑप्शन बी देला लेस रिलायबल, ऑप्शन सी देला लार्ज एंड स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन डी देला सोलर एंड बट मोर रिलायबली, ऑप्शन ई देला फास्टर एंड स्मॉलर कोडा हवा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फास्टर एंड स्मॉलर। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज दैट बेनिफिट हमें कौन पाउचे
Computers are very fast. Yes. RAID can storage huge amount of data. Yes. Option A is the correct answer of computer provide accurate output even when input is incorrect. सेମିତି हबो कि हबनी. Option C देला computers are designed to be inflexibly. एटा भी हबनी. All of the हबो कि हबनी काहे ना B C हमर काटा खाइला ना. Option A तो हबनी ताले correct answer कोड option A is the right answer. Then next question. The speed of a computer is usually measured in बहुत important question एटा. कोड हबो ना megahertz, gigahertz, kilohertz, both A and B, none of these. Confuse करिछि पूरा. कोड हबो option D, both A and B. Megahertz and gigahertz रे. A main characteristic of a computer system is dash that can perform different type of tasks at the same time. Na delegation, accuracy, multitasking, versatility, speed. कोड हवा ना versatility हवा. ऑप्शन बी है. ऑप्शन गुड़ा इंटरचेंज हो जाए. versatility हमें ऑप्शन मन रखनी डायरेक्ट आंसर मन रखिए. ऑप्शन मन रखले परीक्षा रे कंफ्यूज होगा. versatility is the correct answer. A computer is free from tardiness reflected which characteristic. कोडा ना diligence. Diligence is the correct answer. Then next which characteristic of a computer distinguishes it from electronic calculator. कोडा ना accuracy देला, storage, versatility देला, automatic देला, none of these देला. एटा कोन हबो ना storage. Option B is the right answer. Which of the following is not characteristic of a computer? Intelligence, versatility, speed, automation, none of these. कोडा हबो which of the following is not characteristic of a computer? Intelligence. Option A is the right answer. And next question. Which of the following statement about computer is not true? Not true is. তাহলে অপশন কোন দিছি চলা দেখিবা. Computers have no intuition. Computer cannot take a decision by its own. Computer have no ability to adapt. Computers can have imagination. Computers does not have emotion. তাহলে কোডা হবো না অপশন ডি. কারণ ইমাজিনেশন কম্পিউটার করে পারিবেন না. সে দিয়েছে have imagination. Then last question. The use of a computer for business application is attractive because of its कौन भाई attractive? Accuracy, reliability, speed, secret code faculty, all of the above. कोडा हबो ना all of above. Option A is the correct answer. Then ଏତିକିରେ part 3 ସରିଲା ଆମର. Then ଆମେ ନୂଆ chapter ଆଣିବା. Thank you.